गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी कर मैं पाया। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ओ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। एको जप एको सालाह, एक सिमर एको मन आह। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, एको एक एक हर आप। पूरन पूर रहो व्याप, अनेक विस्तार एक ते भये। एक आराध पराछत गए, मान तन अंतर एक प्रभ राता। गुर प्रसाद नानक एक जाता, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोहीआ। सबना दा वेसा, सूही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवै। हर हर नाम नित रसण बखाणी। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवै। हर हर नाम नित रसण बखाणी। रहाओ कली काल के मिटे कलेशा, एको नाम मन मह परवेशा। साधु धूर मुख मस्तक लाई, नानक उधरै हर गुर शरणाई। साधु धूर मुख मस्तक लाई, नानक उधरै हर गुर शरणाई। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ
744 अंग ते सुभायमान है। सूही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवै, हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाव। साध दी बाणी अमृतमयी है। साध गुरु महाराज दे परथाए सतगुਰਾਂ ने अंकित किया। साध वो इंसान है जिन्हें अपने मन नूं साध लिया, जो आप मुक्त है। जिहड़ा इंसान आप मुक्त है, ਉਹਦੇ बचन मनुखता नूं मुक्त कर देंगे। आप मुक्त, मुक्त करे संसार। सो गुरु महाराज फरमाते हैं कि साध दी बाणी भाव गुरु का उपदेश। साध वो भी ने जिहड़े गुरमुख प्यारे गुरु की बाणी उचारते हैं ते गुरबाणी का विचार करते हैं, जिन्हों असीं कहने साध संगत। साध संगत दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का विचार करके जिहड़ी आत्मा है वो अमर हो जाती है। अमृत, मृत मैंने मरिया होया, अमृत मैंने सुरजीव। फिर जन्म मरण के चक्कर दे विच नहीं आती फिर दोबारा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिस की गत होवै, हर हर नाम नित रसन बखानी। जिहड़ा जिहड़ा भी इस बाणी नूं जपदा ਉਹਦੀ गत हो जाती। गत भाव माया तो उपर उठ जाता, निर्लेप हो जाता। साध संगत जी गुरबाणी पढ़ के, क्योंकि यह सवाल कई बार पूछा जाता कि सानू गुरबाणी के भाव या अर्थ नहीं पता। गुरबाणी पढ़न का ते सुनन का फायदा है। साध संगत जी जिहड़ा पानी हुंदा ना, पानी नूं बाणी की समझता नहीं। जदों अमृत छकाउण वेले पंज प्यारे अमृत की तैयारी करते हैं तो उदों पंजां बाणियां का पाठ हुंदा। जिद्दां जिद्दां बाणी पढ़ी जाती आ, बाणी की जिहड़ी वाइब्रेशन, बाणी का भाव वो पानी के कणां दे विच समा जाता। जिहड़ा भी उस अमृत नूं छकदा, वो बाणी का प्रभाव मन ते पैंदा। साडा शरीर भी 2/3 हिस्सा 66%, 66% पानी है। जदों असी बाणी सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका प्रभाव हर खून के छोटे तो छोटे जर्रे ते फर्क पैंदा। पर जदों असी बाणी का भाव समझ लैंदे हैं, भी सानू बाणी समझ आन लग पैंदी है, तो साडा मन चाहुंदा भी असी परमात्मा नूं मिलीए हुण। क्योंकि निर्वाण अवस्था दे विच आके एक वो अवस्था जिथे सिर्फ एक इच्छा होंदी है भी वाहिगुरू का मिलाप हो जाए। यह पता लग जाता है ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, इस गल की समझ आ जाती। प्रतख बिल्कुल 100% यह गल समझ आ जाती है, तो मन दे विच भरोसा बन जाता भी यह गल बिल्कुल ठीक कही है सतगुरु ने। ए कुटुंब तू जो देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछुताई है। सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। जे सतगुरु का उपदेश सुनेगा तू सच दे विच समा जाएगा। यह अवस्था साध संगत जी निर्वाण अवस्था। हुण दूजा सवाल यह संगत पुछदी आ भी गुरु महाराज ने बाणी दे विच कहा एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताएं उभारा। ਜਿਹੜਾ भी इंसान एक बारी परमेश्वर का नाम जपेगा वो काल के फासे तो बच जाएगा। यह किद्दां हो सकता? असीं तो किन्नी वारी कहा पर जीवन दे विच दुख ही दुख है। साध संगत जी उस अवस्था दे विच पहुंचण वास्ते जिहदा असीं विचार कीता निर्वाण अवस्था, यह अवस्था नूं महाराज ने बैराग की अवस्था भी दर्शाया या निराश। एक होर महाराज ने शब्द वरत्या उदास, भाई बिल्कुल उदास हो गया, माया तो उदास हो गया। यह अवस्था दे विच गुरु महाराज फरमाते हैं निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटा। एक निमक पल झमकन के समय दे विच विच इंसान माया के चक्कर तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण के गेट तो मुक्त हो जाएगा जे निर्वाण अवस्था दे विच आ जाए। वो अवस्था नूं सहज अवस्था भी सतगुरां ने बाणी दे विच अंकित कीता ते दर्ज कीता। सो गुरु महाराज फरमाते हैं जिहड़ी यात्रा शुरू होंदी आ वो जुबान राही ते कन्ना राही शुरू होंदी है। जो जो जपै तिसकी गत होवै हर हर नाम नित रसन बखाणी। रसन मैंने रसना जुबान, जिहड़ा अपनी जुबान दे नाल वाहिगुरू का नाम जपेगा, बाणी पढ़ेगा। तुसी मूल मंत्र की बाणी पढ़ लो। हुण कई बारी नौजवानों का सवाल होंदा भी सानू बाणी कंठ नहीं। साडी हुण जॉब इदां दी आ भी सानू यूरोप दे विच ट्रैवल करना पैंदा, बिजनस ट्रिप ते किते अमरीका जाना पैंदा, क्योंकि दुनिया बड़ी श्रिंक हो गई अजकल। जिन्ने समय तुसी एक पासे तो दूजे पासे जाना है कार दे विच, जहाज दे विच बह जाओ तुसी इंडिया पहुंच जांदे। सही कहंदे आ भी दुनिया सिंगुड़ गई है। सो ट्रैवल करना पैंदा भी नाम किद्दां जपीए। तुसी मूल मंत्र की बाणी याद कर लो या एक ओंकार का जाप कर लो, जिहड़ा सच्चा नाम है। सच्चा नाम मेरा आधारो एक ओंकार जपी जाओ 24 घंटे। एक ओंकार तो याद हो जाता ना, इनू जपो। जिन्होंने गुरु महाराज ने बाणी दे विच फरमाया है बीज मंत्र। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौहों वर्ना में जपे कोऊ नाम। बीज मंत्र वो मंत्र है जिहड़ा बी रूपी मंत्र वाहिगुरू जी ने जप के यह दुनिया शुरू कर दी। ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार शब्द तो सारी सृष्टि बनी है। ਇਹਦਾ जाप करो 24 घंटे, ज्ञान प्राप्त होएगा जे असीं ਇਹਦੇ भाव समझ लईए। एक सारी सृष्टि एक तो आई है ते सारी सृष्टि एक दे विच समा जाएगी। बस जदों तुसीं ऐदां सोचना शुरू करोगे तो तुहानूं दुनिया खेड नज़र आएगी। आवन जान एक खेल बनाया आग्याकारी कीनी माया। जन्म ते मरण एक खेड है, सारी माया वाहिगुरू जी की आग्याकार है। ऐसा संग जी बचन गुरु बाणी दे अमर करने वाले ने। अमृत बचन साध की बाणी। इंसान बड़ियां प्लान बनाता। हुण साध संगत जी का जहाज क्रैश होया जर्मन विंग्स का, ਉਹਦੇ 'ਚ इंटरव्यू लिया उन्होंने कि ਜਿਹੜੇ स्कूल के बच्चे सी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨਸ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣਾ, ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਛਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਛਤ ਭਾਵ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾਧੜੀ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਨੇ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਕਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਚਾ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ਼ਾ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੀ 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹੀ ਕੋੜੇ ਦਾ ਕੋੜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂਰ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਸਤਕ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ,
मैं उधर गया, भाव माया ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 744. Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Suhi, which creates the devotional mood. It's a beautiful melody. On the Anand Karaj, on the wedding ceremony, the Bani of Char Lama is read. That too is composed in Rag Suhi. The essence of the Char Lama, the four parts of the Gurbani, helps us to develop craving. I'm using the word craving. Craving to meet our Creator. And the message for the couple is that you should work together, have a family, lead a life as per Guru's instruction, so that you develop this pyas, this craving to meet Vaheguru. So that there is only one jyot between two of you. Ek jyot doye murti dhan pir kaiye soe. Although you are two bodies, but there is only one light within you. There is only one desire within you, how we can work together as a family to unite with Vaheguru and serve Vaheguru. So Guru Maharaj further reveals in today's Hukamnama, Amrit Bachan Sadh ki Bani, Jo jo japੈ tis ki gat hovੈ, har har naam nit rasan bakhani. Rahao. Bani or words of a sadhu. Sadhu means a holy person. They are immortalizing. Amrit. Which means by practicing the words and the teaching of a sadhu, sadhu implies Satguru, Dhan Dhan Guru Granth Sahib's Bani. By practicing Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib's Bani, one becomes eternal, immortal, and gets liberated from the strifes of material. You know, if you look at your life, there are different types of people around you. In the family, at workplace, there are different types of people, and you can get upset about. People have problems about their career. People have problems in relationships. By practicing Gurbani, you become like a swan. What is the quality of a swan? Swan, although swims in the water, but never gets soaked in the water and never gets drowned. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Guru Granth Sahib's Bani describes Jaise jal mein kamal niralam murgai naisane. Murgai means swan. Surt shabad bhav sagar tariya nanak naam vakhana. So Guru Maharaj says, in this materialistic world, imagine it's a lake of mud. How you can swim, how you can remain intact and without any worry. How you can alienate yourself from the problems in the relationship, in your career, the financial problem. Become like a lotus flower. Which means, remember Almighty Lord who has created the material but remains detached. By keeping the company of Vaheguru who is detached, who is nirlep, you will become nirlep. You know, if you hang around with people
who boast about their house. I've got a 5-bedroom house. I've got a swimming pool at the back of the house. What happens? You start striving for that house. I want to get that. You start doing overtime. You start working harder. Some people end up cheating the system. In that rat race, you lose out union with Vaheguru. But if you hang around with people who are Gurmukh, on the other hand, who want to meet Vaheguru or who live honestly, your mentality, your thinking will change. Similarly, by remembering Vaheguru, who is absolutely immaculate, we become immaculate. So that's called Sath Sangat. Dhan Dhan Guru Granth Sahib's Bani has been blessed to us by our Satgurus, which has descended from Akal Purkh Vaheguru. Dhur ki Bani aayi, tin sagli chint mitai. So Sadh is a person who has reformed his mind, who is liberated, who is not affected by praise, who is not affected by insult, who is not affected whether that person is king. He is not affected or she is not affected if she had to beg. If there is a bad time or good time, always remain immersed in Vaheguru's love. That person is called Sadh. Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when he had the canopy on top, he was immersed in Vaheguru's love. When Guru Arjan Dev Ji Maharaj was sitting on the hot plate, he was immersed in Vaheguru's love. He never complained. In fact, he said, Tera kiya mitha laga, har naam padarth nanak mange. So Sadh is a person who is absolutely detached from the effects of Maya, praise, slander, happiness, sorrow, poverty or richness. By their company, in their association, we become liberated. That's the message today. Journey starts with coming into the Sath Sangat in the association of Gurmukhs, reciting with the tongue Vaheguru's name. Jo jo japੈ tis ki gat hova. Har har naam nit rasan bakhani. Nit means all the time. You can be traveling, but with your tongue, you are chanting Vaheguru's praise. Bij mantra, seed mantra. Bij means seed. If you want to grow a plant, you need a seed. You grow the seed, plant the seed in the soil, given the right weather, given condition, seed is going to sprout. You'll get tree and you will get fruit. Similarly, Ikonkar word is like a seed, which Vaheguru used to create the creation. If you look at the universe, it's like a tree that comes from a seed, Ik-Onkar. By meditating on Ik-Onkar, understanding that everything we see is manifestation of Vaheguru, even water, fish, human beings, animals, birds, it's all different forms which have come from the same seed. Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes in Bani, Ape machi machli, ape pani jal. Vaheguru himself is water, himself is fish, himself is net, himself is fisherman. But that understanding comes with practice by doing Gurbani Vichar. So Guru Maharaj further reveals, those who start reciting Vaheguru's name with their tongue, they become liberated. Now this is amazing. If someone comes to you and say, I'm going to cut your body to look at your heart, what is your reaction going to be? You can't. But now doctor says to you, to live longer, I need to do your heart operation. You need 2 bypass, double bypass operation. There is no choice.
You are going to lie down, you are going to be injected with the anesthetic injection, and doctor is going to cut the body and do the double bypass surgery. Now what has changed is that in your body anesthetic has been injected. Body has been cut, but you don't feel the pain. Similarly, Shabad is anesthetic. Gurbani is anesthetic. More we practice Gurbani in our life, we don't feel the pain of insult. We don't feel humiliation of any insult, of if someone has called us bad person. But otherwise, people are so short-fused. There are so many arguments in the families nowadays. It's crazy. It shows that people are so much away from the reality. People who cause trouble, they are away from the reality anyway. The people who get affected, they are away from the goodness of Gurbani. So Guru Maharaj reveals, in this Kal Yuga, in this dark age, all the strifes and suffering will be removed if Vaheguru's Naam is enshrined in your mind. Vaheguru's Naam means Vaheguru's qualities. Talking sweet, being kind, being honest. These are the qualities which liberate us. They are called divine virtues. Sadhu tur mukh mastak lai, be in the Sath Sangat and have the feet dust of the sadhus on your forehead, which simply implies listen to the advice of the sadhus, of the Gurbani with humility. Nanak udre har gur sharnai, Nanak has liberated himself. Udre means to liberate. Has liberated himself from the clutches of Maya by being in the Sharnai, in the sanctuary of the Guru. So Sath Sangat ji, have a great day. प्यार ना फतेह सांझी करनी जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।